हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ चिली सैंडविच। और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो लगेंगे वो कुछ इस तरीके से है। स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 2 कैप्सिकम फाइनली चॉप्ड, 1 कप ऑफ ग्रेटेड चीज़, 1 कप ऑफ मेयोनीज, 1.5 tablespoon of butter, half a tablespoon of chili flakes, 1 tablespoon of oregano, half a tablespoon of pepper powder, 1 green chili finely chopped, and salt as per taste. So, सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और एक फ्रेश पैन में हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। अब पैन गरम हो चुका है, उसमें हम 1.5 टेबलस्पून ऑफ बटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं न्यूट्रीलाइट यूज़ कर रही हूँ। सो वी आर एडिंग 1.5 टेबलस्पून ऑफ न्यूट्रीलाइट। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है, उसमें हम डालेंगे हमारा फाइनली चॉप किया हुआ कैप्सिकम। और इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, राइट। उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, पेपर पाउडर एंड सॉल्ट। कैप्सिकम को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा सॉटे करना है। अब हम इसमें डालेंगे मेयोनीज। और ग्रेटेड किया हुआ चीज़। अब इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हम मिक्स कर लेंगे। Let it cook for a second. तो ये रहा हमारा चीज़ चिली सैंडविच का स्टफिंग तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे। और
साइड इसको स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ब्रेड में बटर लगा के रेडी रखा है, इसको इसके ऊपर कवर कर लेंगे। सेम उसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड बना लेंगे। एंड द सेम वे हम दूसरी ब्रेड से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अब हम एक ग्रिल पैन या तो कोई भी नॉर्मल पैन लेंगे, उस पर इसको ग्रिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे ग्रिल पैन में थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। उसको मैं एक ब्रश से पूरा स्प्रेड कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पे सैंडविचेस रख रही हूँ, लाइक दिस। नाउ लेट इट ग्रिल। अब हम एक बार इसको फ्लिप करके चेक कर लेते हैं। ये ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। नाउ इसको हम ऐसे टर्न करेंगे। सेम वे दूसरी साइड। दूसरी साइड पे ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। नाउ अच्छे से निकाल लेंगे। अब हम इसको ट्रायंगल में, हाफ ट्रायंगल में कट करेंगे, कुछ इस तरीके से। We are going to plate this in a simple way, like this. Thank you so much guys for watching this video. If you like the video, hit the like button. Do not forget to subscribe my channel and comment your thoughts below.